Hi everyone. So this will be the last lecture on chi-square distribution, and uh, let's discuss what is degrees of freedom. What is degrees of freedom? अभी तक आपने देखा होगा मैं बस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात कर रहा हूँ. So let's see what's this degrees of freedom. So in statistics, simply degrees of freedom refers to the number of observations minus independent constraints. So let's represent this by V. So in statistics, V is simply number of observations minus number of independent constraints. But what is this degrees of freedom in actual mean? So let's give an example. If this is a classroom, if this is a classroom of 40 stats students, clear? Now professor of the stats department bring some students. Let's suppose bring one student from the humanities background into this class, right? So now total number of students will be 41, clear? Now if I talk about the degrees of freedom in case of this 41 students, that will be 41 minus 1, that is equal to 40. Why? Because this one which is from humanities background is my independent constraint. This is my total number of observations in this when we have the 41 students. Then just subtract the one which is a independent constraint in this class which is independent. So in statistics, when we have the independent constraints in our data set, we just subtract that from the total number of observations. That's my degrees of freedom. That's my degrees of freedom. Let's see what degrees of freedom does. It simply affect the shape of the distribution. Or if I say for a single sample with n observations, then I can say V is equal to n minus 1. For a single sample, we have the number of constants that's equal to 1, which is independent. So V is equal to n minus 1. Let n1 and n2 be two samples. What will be the degrees of freedom? So degrees of freedom will be n1 plus n2 minus 1 minus 2 minus 1 minus 1. So this is equal to V is equal to n1 plus n2 minus 2. So n1 minus 1 from this data set, n2 minus 1 from this data set. So the result will be V is equal to n1 plus n2 minus 2. Whenever you see you had two random samples, that's let's suppose x1 x2 up to xn is my first random sample, y1 y2 is yn is my second sample. Then what will be the degrees of freedom? Combined degrees of freedom will be let's see n1 plus n2 minus 2. This will be my combined degrees of freedom. So here 2 is the number of independent constraints. If you are given with the yeah, see or in statistical inference, or in some cases, if a series consists k parameters, let's say this is beta 1, beta 2 up to beta k. Let's suppose we have the linear regression model, that's yi is equal to beta 1 plus beta 2x plus
beta 3x up to beta kx. Then what will be the degrees of freedom for this linear model? The degrees of freedom will be n minus k is equal to v. So n minus k is my degrees of freedom for this series when we have the k parameters. So whenever you see number of independent variates or parameters, then subtract those parameters and number of independent variates from the total number of observations. That will be our degrees of freedom. Simply, that will be our degrees of freedom. Simply, clear? So now this degrees of freedom will affect the probability distribution. See how? Let's talk on the probability curve of chi-square. Probability curve on chi-square. Let's see. Let's see. Let's see. Probability curve of chi-square distribution of chi-square distribution. See, as you know, in probability curve, we simply look at the maxima or minima value, and in accordance to maxima and minimum value, we plot our graphs. Clear? As you know, in last lecture, we have seen that f dash x is equal to n minus 2. Clear? And this was my mode. And f double dash x, if you have solved that, that is equal to f double dash x is equal to n minus 2 minus x divided by 2x. Clear? Into f of x. That was my function, but we concentrate only on this term. See, this f double dash x will give me maxima or minima value when we put n minus 2 in place of x. जब भी हम x की जगह n minus 2 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगा, या जीरो भी मिल सकता है, या अगर हम n minus 2 से ज्यादा वैल्यू पुट करेंगे x की जगह तो f डबल डैश x अगर ग्रेटर देन आया तो मिनिमा मिलेगा, अगर लेस देन आया तो मैक्सिमा मिलेगा, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा. ये आपको पता होगा, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा. तो सी अगर मैं ग्राफ की बात करूंगा, काई स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसे आ जाता है. That is, let me plot this. That is, this is 0.5. See, this is for n is equal to 1, and this is for n is equal to 2, this is for n is equal to 3, this is for n is equal to 4. Now we have the f dash x is equal to n minus 2, f double dash x is equal to, that is n minus 2 minus x divided by 2x. Clear? So see, whenever n is equal to 2 in this, so f double dash x is like inverted j. When n is equal to 1,
we have the graph that the curve is the inverted J. When n is equal to 1, we will get inverted J-shaped curve. That's inverted J-shaped curve. And as you can see, this is my maximum value, maximum, then minimum. Then the graph for n is equal to 1 is monotonically decreasing. This is monotonically decreasing. What's monotonically decreasing? That's simply decreasing. That's simply decreasing. So see, graph for n is equal to 1 degree of freedom is monotonically decreasing. And for n is equal to 1, n is equal to 2. This is simply when n is equal to 2, this is again monotonically decreasing. Monotonically decreasing graph. For n is equal to 2, as you can see, this one, this is monotonically decreasing. Whenever n is greater than 2, strictly greater than 2, then the graph is monotonically increasing. As you can see, for n is equal to 3, this is increasing, then this is decreasing, but overall this is increasing. This is increasing. For n is equal to 3, for higher values of n, we get the monotonically increasing graph. Monotonically increasing graph. And the PDF of this for x greater than 0, for x greater than 0, for x greater than 0, PDF of chi-square is always non-negative. Non-negative. So f double dash x will be less than 0 if n minus 2 is less or equal to 0, which means that if n is less or equal to 2. Clear? So f double dash x, or I can write this as f double dash x is greater than 0 when, if x is less than n minus 2. This is equal to 0. F double dash x is equal to 0 if x is equal to n minus 2, and this is less than 0 if x is greater than n minus 2. See how? When x is equal to n minus 2, so f double dash x is equal to n minus 2 minus n minus 2 upon 2 n minus 2, which is n minus 2 minus n plus 2 divided by 2 n minus 2. This is equal to 0 divided by 2n minus 2, which is equal to 0. When n is equal to n minus 2, f double dash x is equal to 0. And when x is greater than n minus 2, when x is greater than n minus 2, let's suppose x is equal to n minus 1, f double dash x will be equal to n minus 2 minus n minus 1 upon 2 n minus 1, which is equal to n minus 2 minus n plus 1 divided by 2n minus 2. This is 4 here. 2n minus 2, which is equal to this, and this goes, this is equal to minus 1 by 2n minus 2, which is less than 0. See on this, this is my negative. So overall this is negative. When n is equal to when n is greater than n minus 2, so f double dash x is less than 0. And when x is less than n minus 2, that's x is equal to, let's suppose, n minus 3. F double dash x is equal to n minus 2 minus n minus 3 upon 2 n minus 3. This is equal to, this is positive, that's equal to n minus 2 minus n plus 3 upon 2n minus 6. This is equal to 1 divided by 2n minus 6, which is positive. So simply, this is the graph probability curve of chi-square distribution, for chi-square distribution. And as you can see from the graph, if you are asked
to give the answer for for n is equal to, for n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, where we get the positive skewered on, for n is equal to dash positive skewered. As you can see, what positive skewered, that is the tail will be for left side, as you can see, positive skewered, as you can see the graph for n greater than 2, we get the positive skewered graph for n greater than 2, positive skewered for n greater than 2. For n greater than 2, we get the graph, probability curve is positive. We can say the probability curve is positive skewered. And see, if I increase the degrees of freedom, if I increase the number n, that's number n, or we can see whenever we increase n, so the graph uh, will be symmetric and will tend to normal distribution. Let's see how. See, as you know, this is the graph, and this is for, let's say, suppose this is for n is equal to 5, and if I increase n is equal to 100, so the graph will be like this. What is this? This is somehow normal curve, that's mesokurtic, that's normal curve, that's symmetric. Let's suppose for higher degrees of n, we get the normal curve or mesokurtic. So from this we can conclude for a large n, or for similarly this is for large degrees of freedom, chi-square will tend to normal. Remember this, chi-square will tend to normal. Chi-square will tend to normal. Now here is the question. The question is, let x1 and x2 be independent standard normal variate and let y is equal to x1 minus x2 whole square divided by 2 will follow chi-square 1, prove. This question is asked in ISS exam plus CUET PG exam, that's 2024 something, plus this question is from FMS back exercise. See how to solve this question. As you know, when x1 will follow normal 0, 1, then x1 square will follow chi-square 1, x2 will follow normal 0, 1, x2 square will follow chi-square 2, then x1 minus x2 will follow normal mu1 minus mu2, sigma 1 square plus sigma 2 square. So x1 minus x2, as they are the IID independent, so covariance term will be 0. As you know, the variance of x1 minus x2 will be variance of x1 plus variance of x2 minus 2 covariance x1 x2. So this term will be 0. So this is variance of x1 plus variance of x2. That is why
here is sigma 1 square plus sigma 2 square. X1 minus x2 will follow normal 0 comma 2. So x1 minus x2 divided by standard deviation will follow normal 0 comma 1. And whenever we take the square of this becomes follow chi-square 1. Chi-square 1. So can I write this as x1 minus x2 square upon 2 will follow chi-square 1. Will follow chi-square 1. Clear? See, एक बात बताऊं मैं, चाहे पूरे YouTube पे आई एम नॉट, मतलब मैं खुद को मतलब खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूं, बट स्टिल पूरे YouTube पे देख लो, काई स्क्वायर पे मैंने जितने क्वेश्चंस थ्योरम्स कराए ना, किसी ने नहीं कराए होंगे। आई बैट यू, अगर किसी ने कराए होंगे ना तो मेरे पास आ जाना, 1000 रुपए दूंगा उसे, और वो भी फ्री में। पेड कोचिंग वाले इतना नहीं कराते हैं तो फ्री में कौन कराएगा। लेट्स सी, हमें क्या है, आप पढ़ लो, मजे कर लो। सो सी, क्वेश्चन है, if x follows uniform 0 comma 1, then minus 2 log x will follow chi-square 1 or 2, chi-square 2, hence proved. प्रूव करना है हमें, बट ये रिजल्ट है, हमें ये प्रूव करना है। हो गया ना प्रूव कि अगर x फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म 0 कमा 1 तो माइनस 2 log x chi स्क्वायर हो रहा है। रिजल्ट याद रखो, हो गया प्रूव। बट नहीं, इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। सी simply whenever we are asked to prove something, write proof. See, आपने अभी तक देखा होगा कि काई स्क्वायर में हम ज्यादातर यूज कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशंस। एक तो ये, दूसरा एमजीएफ, ये दोनों ज्यादा यूज हो रहे हैं। एमजीएफ और ट्रांसफॉर्मेशन तो ज्यादा यूज हो रहा है। एंड जिनका ये स्ट्रांग नहीं है, प्लीज एफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, इन्फ्रेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिनका ये स्ट्रांग नहीं है, पहले ये स्ट्रांग कर लो। क्यों? क्योंकि पूरा इन्फ्रेंस और पूरा जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो यही है, ट्रांसफॉर्मेशन एमजीएफ, क्वेश्चंस भी सॉल्व यहीं से हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन एमजीएफ। बाकी वो नुन्नू मुन्नू क्वेश्चंस तो हो जाएंगे ना, वेरिएंस पूछा गया, टी का मोड पूछेगा, एफ का, वो नुन्नू मुन्नू क्वेश्चंस तो हो जाएंगे। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस आपसे तब तक नहीं होंगे जब तक आपको ट्रांसफॉर्मेशन आती होगी। अब ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से पढ़ना है आपको तो पता ही है, रैंडम वेरिएबल्स में ट्रांसफॉर्मेशन है, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसफॉर्मेशन है। और आज जिसको जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना वो डबल इंटीग्रल में पढ़ लेना, डबल इंटीग्रल्स में। और रैंडम वेरिएबल्स को तो पता ही है, कैलकुलस है बस, और कुछ नहीं है, कैलकुलस है ओनली। रैंडम वेरिएबल्स पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1D एंड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर 2D, ये दोनों आपको पढ़ने। एंड एमजीएफ तो पता ही है, एमजीएफ कहाँ से करना है, एफएमएस से ही करना है, और उसके क्वेश्चंस करने हैं आपको। So see, this is the question from the transformation. So see, what's f of x? Uniform है ना, तो 1 होगा ना, when x is between 0 and 1. This is the PDF of this. And let's suppose this is my y. So y is equal to this. मैंने आपको बोला है कि अगर हमें f of y निकालना हो, this is a new function, ये function, देखो हमारा old function ये है, new function ये है. So f of new into Jacobian. अब Jacobian कहाँ से आएगा? Simply Jacobian आएगा यहां से, माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू लॉग एक्स। क्या ये ठीक है? क्योंकि मैंने क्या किया, ये जो टू है ना ये डिनोमिनेटर में लेके आया मैं, और माइनस को यहाँ शिफ्ट किया मैं।
सो लॉग को खत्म करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, व्हाट्स ई लॉग, ई लॉग एक्स किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। सो क्यों ना हम दोनों साइड से ई ऑपरेट करेंगे, दिस इज ई माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू एक्स। सो अब x की वैल्यू ये आई, नाउ डिफरेंशिएट करना है, कितना इजी है, अब डिफरेंशिएट करना है। सो से डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विल बी e टू द पावर माइनस वाई बाई टू और इसकी इंटरनल डिफरेंशिएशन माइनस वन बाई टू dy is equal to dx. So Jacobian is my minus 1 by 2e minus y by 2. So now f of y will be, f of old कितना है, 1 नहीं है ना, into Jacobian, Jacobian is minus 1 by 2 e raised power minus y by 2. That's simply minus तो ये खा जाएगा ना, mod खा जाएगा, that's equal to 1 by 2 e to the power minus y by 2 and y is greater than 0. So this is the PDF of, किसका PDF है ये, exponential 1 by 2 which is chi square 2. So minus 2 log x will follow chi square 2, also minus 2 log x will follow chi square, sorry, exponential 2, exponential 1 by 2. Now इसका corollary COROLLARY, that is minus 2 summation I is equal to 1 to n log x will follow chi square 2n. इसका आपको यूज होगा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में। एंड minus 2 log minus -2 summation log x will follow exponential 1 by n. This is, अगर किसी ने ये लिखा ना, this is one of the most beautiful blunder, beautiful blunder, ये कभी होगा ही नहीं, only this is valid, आप चेक कर लेना, और ये वैलिड है फॉर ओनली 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये एक्सपोनेंशियल 1 by 2 को फॉलो करता है, ठीक है। तो यहाँ आपका chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाता है, हाँ, बट कंप्लीट तो ये पूरा नहीं होगा, बट जितना आपके सिलेबस में है पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया, एंड दैट टू इज फ्री ऑफ कॉस्ट, बट क्वेश्चंस आपको करने हैं। से द स्टूडेंट्स जो सेमेस्टर में है उनके लिए इतना काफी है। हाँ, अगर उनको कोई भी क्वेश्चन आएगा ट्रांसफॉर्मेशन पे एमजीएफ में, मैंने सिखा दिया कि कैसे करने हैं, क्लियर। बट जो सीयूईटी जैम वाले हैं और आईएसएस वाले हैं, कोई अगर होगा, भगवान का बंदा कोई होगा आईएसएस वाला, उनके लिए ये काफी है। बाकी जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना, वो इन्हीं टॉपिक से आपको मिक्स करके आएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। आप प्रीवियस ईयर उठा लो, कुछ भी उठा लो, यहां से बाहर कुछ नहीं आएगा। हाँ, बाकी आपके बेसिक्स कितने क्लियर है वो आप देख लें। सी देयर इज अ क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन है जो मैं आपको बताऊंगा कि वो क्वेश्चन क्या है। सी क्वेश्चन है x1, x2, x3, x4 be IID random variables with finite mean and variance, रैंडम वेरिएबल्स नहीं, आईआईडी रैंडम, हाँ आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स, क्योंकि वो रैंडम, यहाँ हम सीधे बोलेंगे बी रैंडम सैंपल, वो आईआईडी ही होता है, बी रैंडम सैंपल, बी रैंडम सैंपल with finite mean and variance is equal to 2, then which of the following is true? A part x1 and x2 are independent. दूसरा x1 plus x2 and x3 are independent. C x1 minus x2 and x1
plus x3 are independent. D, none. देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है. See, what's covariance of x1 comma x2? That's simply expectation of xy minus expectation of x expectation of y. ठीक है, इन्होंने बोला है कि x1 एंड x2 आर इंडिपेंडेंट, सो कोवेरियंस इनके बीच में क्या होना चाहिए, या यहां पे आप लिख लो x1 प्लस x2. तो अगर हम ऐसे लिखेंगे कोवेरियंस बिटवीन x1 प्लस x2 कामा x2, दैट विल बी इक्वल टू कोवेरियंस x1 और x2 तो इंडिपेंडेंट होंगे. हाँ, अगर देखो कोवेरियंस x1 एंड x2 विल बी जीरो, व्हाई, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट. क्योंकि x एंड y आर इंडिपेंडेंट तो कोवेरियंस तो जीरो होगा ना, ये तो प्रॉपर्टी है. हाँ, क्लियर है. और कोवेरियंस x1 plus x2 comma x2, this will be equal to covariance of x1 comma x2 plus covariance of x2 comma x2. So see, this is zero. Covariance of x1 comma x2 तो zero है ना, कि इंडिपेंडेंट है ना, तो zero plus this is variance of x2, 0 plus 2. So ये नहीं आया किसके बराबर, this is not equal to 0. So ये इंडिपेंडेंट नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है. कौन सा, ये वाला इंडिपेंडेंट नहीं है. Now see, दूसरा क्या है, कोवेरियंस बिटवीन x1 प्लस x2 कामा x3. इसमें हम क्या करते हैं, बस कोवेरियंस निकालते हैं. अगर कोवेरियंस जीरो आया तो, क्योंकि देखो x1 और x2 इंडिपेंडेंट ऑलरेडी है, तो जब हम कोवेरियंस निकालेंगे अगर वो भी जीरो आया तो वो इंडिपेंडेंट होगा ही होगा. दिस इज कोवेरियंस बिटवीन x1 कामा x3 प्लस कोवेरियंस बिटवीन x2 कामा x3. So see, this is also, what's this, this is x1 x3, they are independent, तो जीरो होगा, 0 plus 0 is 0. ये क्या है, इंडिपेंडेंट है. And covariance between x1 minus x2 comma x1 plus x3, this is equal to covariance x1 x1 covariance plus covariance x1 comma x3 plus covariance x2 minus x2 comma x1 plus covariance minus x2 comma x3. See, जब x1 और x1 सेम होते तो वेरिएंस ऑफ x1 होता है, प्लस 0 माइनस ये भी 0 माइनस ये भी 0, सो दिस इज 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0. सो ये इंडिपेंडेंट नहीं है. ओनली कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, दैट्स ऑप्शन नंबर 3, दैट्स ऑप्शन नंबर 2, सॉरी 3 तो करेक्ट नहीं है, 4 तो नन नहीं है, ये भी नहीं है, ये करेक्ट है. बस ये क्वेश्चन छूट गया था, ठीक है ना. सो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन आपका कंप्लीट हो गया. कितने लेक्चर्स हो गए काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में, लेट मी सी. chi-square distribution, that's 1 2 3 4 5. In 5 lectures we have completed the chi-square distribution. I hope कि आप सब लोगों ने लेक्चर्स पूरे अच्छे से फॉलो किए होंगे. कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना. And believe me, this is the content which is top notch. सच में आप खुद भी देख लो ना, मतलब जिन्होंने पढ़ा होगा कॉलेज में, जो पढ़ रहे होंगे, जो कोचिंग कहीं पे पढ़ रहे होंगे, इससे बाहर कोई नहीं जाएगा. शायद मैंने ही कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा कराए हैं, थ्योरम्स कराई है, वो डायरेक्ट रिजल्ट बोल देते हैं और ये नहीं पता होता कि कहाँ से आते हैं. क्योंकि जब क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, देखो स्टूडेंट्स को क्या होता है, स्टूडेंट्स ओनली नो द रिजल्ट्स बट दे डू नॉट नो टू हाउ टू प्रूव दैट रिजल्ट्स, तभी वो फंस जाते हैं. आई हैव फेस्ड दैट प्रॉब्लम टू. फिर मैंने क्या किया, मतलब हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन मेरे को पहले नहीं आता था, सीख लिया. जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता था, डबल इंटीग्रेशन पढ़ लिया. एक तो पोलर फॉर्म के में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन, और हाउ टू सबस्टिट्यूट वैल्यूज, अगर x प्लस वाई है उसको u में कैसे सबस्टिट्यूट करते हैं और v को x2 में कैसे सबस्टिट्यूट करते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको आनी चाहिए. एंड हाउ टू पुट लिमिट्स, दैट इज द टफ टास्क.
कि हाउ टू पुट लिमिट्स इन जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन या जॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन, वो सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना।